students, today I will teach you the fertilizer and the manure. We have taught you in previous class replenishment of nutrient in the soil by number one, natural method, and second is by manure and fertilizer. Natural method, previous class I have explained you what you were using in the natural methods. Now today we will go to the manure and fertilizer. Now student, pay attention. What is a manure? Manure, you know, nothing so new. It is a formed by the bacterial decomposition of the agricultural waste and house wastes, farm wastes. These are the manures. So what we have written it? The manure, it is an organic compound obtained by the decomposition of plants and agricultural waste. तुम्हारे घर के पास जितने कूड़े कचरे, पेड़ पौधे के कटे हुए, गाय भैंस के गोबर, सबको जहाँ पर आप डालते हो वो सड़ जाता है, उसको खेतों में डाल देते हो, उससे हम मैन्योर बोलते हैं. ठीक है? तो मैन्योर क्या है? इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, लीव्स एक्सेट्रा. ठीक है? ओके. मैन्योर. द कंपोस्ट. What is the compost? It is made by the decomposition of farm and domestic organic waste like dry leaves, gobar, sewage waste, etc. Compost. Manure is also called, the compost also comes under the same category. What is a compost? It is also formed by the decomposition of agricultural waste. जो खेतों में जो गंदगी होती है, जो टूटे पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, जो सड़े गले होते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, खाई में डाल देते हैं, डिच में, और क्या होता है, वो सड़ता है, वही हम कंपोस्ट बनाते हैं. इट इज मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वेजिटेबल का छिलका, जूठा, खाना आधा खाया हुआ, फूड ग्रेन्स, नॉट प्लास्टिक, बिस्कुट का रैपर नहीं, दाल का पैकेट नहीं, पैकेट इज नॉट द ऑर्गेनिक वेस्ट. यू आर द दाल कैन बी द ऑर्गेनिक वेस्ट. सो ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक ड्राई लीफ, गोबर, सीवेज वेस्ट एक्सेट्रा. जो नाली की गंदगी यहाँ पहुंचती है वो भी, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ कंपोस्ट. The process of producing the compost is called composting. What is composting? The process of producing of compost is called composting. Manure आपको मालूम हो गया? What is compost? कंपोस्ट बनाने की विधि को कंपोस्टिंग करते हैं. ठीक है? कंपोस्टिंग. अब इसके बाद आइए कंपोस्टिंग. इट इज रिच इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. कंपोस्ट क्या होता है? आपको कंपोस्ट में क्या, इट इज रिच इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. कंपोस्ट में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूरा होता है, but not rich in the nitrogen, phosphorus and potassium. Nitrogen, phosphorus and potassium. The compost we are making from the agricultural waste, जो मैं खेत की पत्तों से, सड़े गले पौधों से, फूड के वेस्टेज से जो कंपोस्ट हम बनाते हैं, वह ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में तो रिच होता है, लेकिन वो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटासियम, ये तीनों उसमें नहीं होता है, बहुत कम क्वांटिटी. ठीक है? सो ऑर्गेनिक कंपोस्ट, द कंपोस्ट इज डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास. डिफिशिएंट. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट टुडे इज द ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या होता है? तुम घर में पूछोगे अपने दादा और पेरेंट्स से, दोज आर डूइंग द फार्मिंग, दे विल टेल यू. वो पहले खेत में कुछ पौधे, कुछ बीज छिड़क देते हैं. जब वो पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उसको काटते नहीं, दोबारा टीलर से या प्लाइंग से उसको जमीन के अंदर दोबारा दबा देते हैं. सो दैट ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन क्रॉप है, वो कंपोस्ट का काम करेगा,
वो फर्टिलाइजर करेगा, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट को मेंटेन करेगा। जो हरे पौधे तो आप जमीन में दबा देंगे, वो जमीन के सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन करेगा, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करेगा। इसलिए उसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर, टर्निंग द ग्रीन क्रॉप इनटू द सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ मैन्योर। व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? It is a turning of green crop into the soil for the purpose of manure. Plants like Sesbania are grown and ploughed back in the soil. It decomposes and increases the soil fertility. क्या करता है green manure? Increases the soil fertility, saving soil from erosion and leaching. ये सॉइल को सॉइल इरोशन से भी बचाता है और लीचिंग से भी बचाता है। तो आपने समझ गया कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। उसमें क्या था? आज का टॉपिक है मेरा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। What is a manure? Manure, it is formed by the bacterial decomposition of the plant, leaves, agricultural waste, house waste, everything. This is a biodegradable manure. It is an organic substance. It gets mixed into the soil. It increases the soil fertility. It is very rich in the organic nutrients, but it is a very poor in terms of nitrogen, phosphorus and potash. They do not have. आइए अब मेरा टॉपिक होगा फर्टिलाइजर। सो क्वेश्चन आपने नहीं लिखा, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंपोस्टिंग? What is composting? Second question, name the fertilizer or nutrient which is not present in compost. Third number question, write down name and composition of fertilizer or fertilizer. Name 2 nitrogenous fertilizer. Nitrogenous fertilizer. So student, I have written all the questions. You need to do the homework of 4 questions. Let me come to the last point of the fertilizer. I am dealing with fertilizer now. What is the fertilizer? It is a chemical substance made by the man in the industry. It is a chemical substance made by the man in the industries. It is coming under the category of non-biodegradable chemical substances. So, it is especially made as per the requirement of the land. What your land requires. The fertilizer. It is a man-made chemical substance which are rich in one or more nutrients like nitrogen, phosphate and potash. You know that organic
fertilizer, organic manures are deficient of potash, phosphorus and nitrogen. But chemical fertilizer, we are making the rich in the nitrogen, phosphorus and potash, so that it can fulfill the requirement of the soil, fertility and deficient nutrient can be supplied by the chemical fertilizer. There are the different types of fertilizers. It is man-made chemical substance which are rich in one or more nutrients. वो कई न्यूट्रिएंट, केवल पोटास भी आप डाल सकते हो if your land is having potassium, less potash. If your land is suffering for the lack of the nitrogen, you can put the nitrogenous fertilizer into that. Your land is having the phosphate, deficiency of phosphate, you can put the phosphatic fertilizer in your land. As per the requirement, the chemical fertilizer, you can add it, or as per the which type of crop you are going to plant it, as per that you can select a fertilizer. So now children, fertilizer. Now, what are the types of fertilizer? Number 1, nitrogenous fertilizer. Number 2, phosphatic fertilizer. Number 3, potassic fertilizer. And number 4, complex fertilizer. These are the fertilizers. Okay, now come to the part. Nitrogenous fertilizer are mainly urea, ammonium phosphate, sodium nitrate. These are urea also, urea, ammonium phosphate and sodium nitrate. These 3 fertilizers are available in the market. They are very rich in the nitrogen. If we are going for the farming crop which require nitrogen, you can use this. Potassium, phosphatic fertilizer. Phosphatic fertilizer में superphosphate and ammonium phosphate. There are 2 types of fertilizers are there, superphosphates and ammonium phosphate. Similarly, potassic fertilizer has potash. Directly you can use the potash or potassium sulfate. Potash or potassium sulfate. You have got 2 types. In complex, you can use urea, nitrogen phosphate and ammonium phosphate. Here, more than 2 types of nutrients are present in the complex fertilizers. Complex fertilizer, nitrogen phosphate, it has nitrogen and phosphate both. Ammonia phosphate, it has nitrogen and phosphate both. Okay? So children, now just see that. I will show you what is the use of fertilizers, how it is helpful to you. 5. You'll find pH test kits and the best organic fertilizers on our website. Let us help you build your garden organically. And various liquid organic fertilizers. No, I don't think we will be able to show them the fertilizers. No. Okay, children, we will be able to show you in the later class. Do the homework, right? We will not waste your time much. See that we will show you in the next class the clips. Okay? Thank you. Do the homework.